Hello there, my curious minds. Hope you all are doing well. I'm your chemistry teacher Deeksha, and I welcome you all to our part 3 of lesson 3, atoms and molecules. So my dear students, you already have done in the previous video lesson. I hope you have gone through it. We talked about atoms and molecules. हमने ये समझा था कि atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं, molecules के types क्या होते हैं, atomic mass और एटॉमिक मास यूनिट इनको कैसे हमने डिफाइन किया था. दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर विद अ सेशन अगेन. Very important, extremely important lesson. Again, very important part of the lesson, chemical formula. Got it, students? So we are going to dive deep into this session, students. Let's begin now quickly. Before we start discussing what chemical formula are, let's understand what are ions. ठीक है? So ions क्या होते हैं, students? ये charged species होती है. बहुत ही important चीज है ये, students. Very important. Charged species. So till now we have already talked about atoms. Atoms क्या होते हैं, students? Neutral. For example, if I say sodium atom, so how do you write it? Na. What is the symbol of sodium? I hope you all have revised. Na. Correct. Now sodium is an atom. Sodium, if this becomes a charged species, that means from an atom, now it has become an ion. Okay, this is what I'm trying to say. क्या हो गया, इस एटम ने कुछ ऐसा हुआ, एटम में कुछ ऐसा हुआ कि वो चार्ज हो गया. सो आयन इज नथिंग बट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम. ओके, सो नाउ व्हाई दिस हैज हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ कि एक एलिमेंट जो है, एक एटम जो है सोडियम का, वो अचानक से क्या हो गया, चार्ज हो गया. एक सिंपल सोडियम एटम, इट हैज बिकम नाउ सोडियम आयन. So why this is happening? This answer you will get in our next lesson. तो अभी के लिए हम क्या देखेंगे, हमें सिर्फ ये समझना है कि आयंस क्या होते हैं. ये चार्ज स्पीशीज होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती है. इट कैन बी अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज. ठीक है, एक पूरे ग्रुप पे एक चार्ज होगा या एक सिंगल एटम पे चार्ज होगा. सो दिस सोडियम एटम, दिस बिकम्स सोडियम आयन, मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बाद में पता चलेगा. अभी के लिए यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग सम चार्ज इज नोन एज आयन. Got it, students? Now these ions are of two types. As I told you, they can be positively charged or negatively charged. The positively charged ions are known as cation. And the negatively charged ions are known as anions. ठीक है, सो क्या याद रखना है हमें, आयंस दो तरह के होते हैं, cations and anions. ठीक है, cations positively charged, anions negatively charged. ठीक है, अब बात ये है कि cations और anions को फर्दर क्लासिफाई किया गया. दैट मीन्स cations कैन बी मोनोएटॉमिक cations और पॉलीएटॉमिक cations. Anions can be also monoatomic anions and polyatomic anions. So what do you mean by this monoatomic and polyatomic? बहुत आसान है students, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो आपको दिया है. मोनो, सिंगल, पॉली, many. Okay, so monoatomic ion का मतलब क्या होता है, ions which are formed from single atoms, they are known as monoatomic or simple ions. क्या examples है students में, सोडियम आयन. सोडियम is a single atom, उस पे जब चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया हमारा, मोनोएटॉमिक कैटायन. पॉजिटिवली चार्ज इसलिए क्या हो गया, मोनोएटॉमिक कैटायन. देन वी हैव क्लोराइड आयन. इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी हैव एलिमेंट क्लोरीन. तो क्लोरीन का जब एक एटम होता है, उस पे जब एक चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन गया, एक आयन बन गया. कौन सा आयन, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया है, एन आयन बन गया है. और एक सिंगल एटम है तो इसलिए क्या है, मोनोएटॉमिक एन आयन. ठीक है, नाउ मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम भी क्या एक एलिमेंट है, Mg. उस पे भी क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक चार्ज आ गया. कितने, दो चार्जेस आ गए यहाँ पे.
मैग्नीशियम पे आता है +2. मैग्नीशियम is the ion which has 2 positive charges. So it's a positive ion and that's why it is known as cation, and it's a single atom which is carrying a charge. So that's why it is a monoatomic cation. Okay. Similarly, students, oxide ion, oxygen is single atom. When it has a charge, okay, it develops a charge. So it has a -2 charge, okay. There are 2 charges and 2 negative charges. So that's why oxygen now becomes oxide ion, and because it is carrying a negative charge, so it is anion, and because it is a single atom, so it will be monoatomic anion. Got it, students? Clear? Now what about polyatomic? Poly means many, okay. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. So we have examples as sulfate ion. So how do we write sulfate ion? SO4 2-. This is sulfate ion, students. The whole group is carrying 2 negative charges. Okay, so this is a group of atoms carrying a charge, so it is a polyatomic ion. Okay, so this is a polyatomic ion. Then we have phosphate ion. Phosphate, how do we write? PO4, and the whole group of atom is carrying 3 negative charges. So polyatomic anion. This is also polyatomic anion because it is carrying a negative charge, so it's anion. Okay. Carbonate ion is CO3. The whole group is carrying 2 negative charges, so it is also a polyatomic anion. Got it, students? So this is the basic difference between monoatomic and polyatomic ions. Extremely important, students, and while you will use it, you will understand, you will be able to write these charged species. Got it? Now how this is made, you will be wondering how this SO4 is made, how this PO4 is made, where do they come from? So students, this will eventually, you will learn about it in your higher standards. So no need to worry about it. We are just here to understand the basics. अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ions क्या होते हैं, cation, anions क्या होते हैं, polyatomic, monoatomic ions क्या होते हैं. ठीक है? Now this is the most important thing. So please, you have to actually memorize it. Otherwise, you won't be able to write the chemical formula. So how you write the chemical formula, it depends on how well you have learned this table. Got it? So you need to memorize, you need to learn. But as I told you, if you practice more and more questions on chemical formula, you will be able to learn this whole table without any problem. So students, what you have to do? See, the first column is talking about the valency. Valency means what, students? Combining power. We will talk about what do you mean by combining power. अभी के लिए आपको क्या समझना है? For ions, this valency 1, 2, this means the charge on that atom or groups of atom. ठीक है? So charge 1. If I am talking about the valency 1, that means charge 1. What is the name of the ion? Sodium. Sodium has a charge of +1, है ना? ये valency 1 है. इसका क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट्स? इन सभी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स पे कौन सा चार्ज है? या तो +1 है या फिर -1 है. ठीक है? सो सोडियम पे +1 चार्ज है. पोटेशियम आयन is also having 1 +1 charge. Silver ion is also having +1 charge. Copper ion Cu +1. Then these were the metallic ions, है ना? ये सारे metals है, metallic ions है. नॉन मेटल के क्या होते हैं आयंस? देखो, हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन H+. ठीक है, हाइड्रोजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म H+ ऑल्सो एंड H- ऑल्सो. मतलब कैटायन भी बना सकता है हाइड्रोजन और एनायन भी बना सकता है. जब कैटायन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, तो इट इज नोन एज हाइड्रोजन आयन. व्हेन एनायन इज फॉर्म्ड, देन इट इज नोन एज हाइड्राइड आयन. Then chloride we have Cl -1. Okay, so single minus है मतलब -1. Bromide Br -1. Iodide I -1. Okay, so -1 नहीं लिखते हम, 1 को सिर्फ क्या करते हैं, 1 सिंगल नेगेटिव लिखते हैं. so उसे पता चलना चाहिए आपको. The valency is 1
all these ions have a charge of either +1 or -1. अमोनियम आयन, ना अमोनियम आयन, दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है. अब ये जो लिस्ट है ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस की. सो अमोनियम आयन इज अ पॉलीएटॉमिक कैटायन. सो NH4 एंड +1 चार्ज. हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रो, अमोनियम आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, NH3, ये सबको पता है. सो अमोनियम आयन क्या हो गया स्टूडेंट्स, NH4 एंड +1, ठीक है. हाइड्रोक्साइड, सो हाइड्रोक्साइड नेम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर देयर. सो OH-, ठीक है, HO नहीं आएगा, OH-, गॉट इट. नाइट्रेट, जब भी 8 वर्ड होता है स्टूडेंट्स, जस्ट दिस इज अ ट्रिक, whenever there is ATE, okay, at the end of the ion, क्या है, ATE. तो ATE का मतलब इसमें ऑक्सीजन भी होगा, तो नाइट्रेट है मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर देयर. सो NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट, so hydrogen will be there and carbonate group CO3 will be there, and there is a negative charge, -1, got it. Now valency 2, that means all the ions which are having -2 or +2 charges, okay. So magnesium is having +2, magnesium ion. Calcium ion is calcium +2. Zinc ion is Zn2+, iron is Fe2+, copper is Cu2+, okay. Then the negative ones, oxide is O2-, sulfide is S2-, okay. So there are two. Let's talk about the polyatomic ions now. Carbonate is CO3(2-), sulfite, sulfate. So students, whenever there is ITE, ठीक है, एंड में क्या है, सल्फाइट में ITE और सल्फेट में क्या है, ATE. तो दोनों में ही ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है. Whenever there is IDE, so IDE means no oxygen. No oxygen. So when we have these chloride, bromide, iodide, so it's just Cl-, Br-, I-. Sulfide only S-2, okay. So no oxygen. Whenever there is ite and ate at the end, so oxygen is there. The ite one, the ion which is having ITE at the end, it will have less number of oxygen, and the ion which is having ATE at the end, it will have the more number of oxygen. So sulfite is SO3(2-), sulfate is SO4(2-). So oxygen is less over here and oxygen is more in sulfate. Got it? So these are small little things which if you keep in mind, you will be automatically, learn and write these ions. Let's talk about valency 3. That means all those ions which are having +3 or -3 as their charges. So aluminium, Al +3, iron, Fe +3. So just see students, iron exists in 2 valencies. +2 is also there, so we have Fe2+ also and we have Fe3+ also. In case of copper also students, we have Cu+ also and Cu2+ also. Got it? So there are some elements whose ions when we make, we have different valencies. They come in different valencies. The charges can be different. Okay? Multiple valencies are there for some of them. Nitride, so IDE, that means no oxygen. So it's only N3-. Phosphate, students, can you see ATE at the end? Phosphate, so that means there has to be oxygen also. So phosphorus and oxygen together, PO4 3-. So all these are having charges as +3 or -3. So this table is extremely important, students. If you want to write the chemical formula, your first job is to revise and learn this table. Without it, you won't be able to write any chemical formula. Got it, students? Alright. Now, just understand why are we trying to learn these cations and anions? Because when cation and anion, they merge, they combine chemically, they form a compound. So, for example, we have NaCl. We all know, students, NaCl is a compound, sodium chloride. तो ये sodium chloride जो compound है, ये क्या है? हमारा table salt है. We all know this compound, we eat this compound, we know this compound, we have seen this compound. How this compound is made? कैसे बनता है?
कैटायन और अनायन क्या करते हैं, दे मर्ज टुगेदर। ओके, हाउ, हमारे पास ये सोडियम आयन है, हमें पता है सोडियम आयन कैसे होता है, +1 चार्ज है, Na+, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटम्स, Na का एटम और Cl का एटम कंबाइन नहीं कर रहे, पहले ये क्या होते हैं, आयन बनते हैं। तो सोडियम पहले एटम से आयन बनता है, सोडियम एटम पहले आयन बनता है, क्लोरीन का एटम भी क्या बनता है, आयन बनता है, ठीक है, गॉट इट। सो these two ions, Na plus and Cl minus, this is Na plus, this is Cl minus, both of them are having opposite charges, right? Na पर positive charge है, chlorine पे negative charge है. The sodium ion is having +1 positive charge, chlorine ion is having -1 negative charge. Both of them are opposite charge particles, so they will attract, ठीक है, opposite charges always attract, that's the rule. तो ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज, दे अट्रैक्ट, देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस एंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड NaCl, दैट इज द टेबल सॉल्ट. तो एनायन और कैटायन से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यू नीड टू लर्न द cations and anions and the charges or the valencies of these ions so that you can make the chemical formula for a compound. But the thing is students, what do you mean by chemical formula? होता क्या है chemical formula students? हमने देखा कि elements के symbols होते हैं, right? When we write elements, we don't write the complete name of the element, we write the symbol. Similarly students, when we are writing the compound, तो कंपाउंड का हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, वी इंस्टेड वी राइट द symbolic representation, we write the symbols of those compounds. So chemical formula is nothing but the symbolic representation of the composition of compound. Compound किससे composed है, किससे बना है, उसको show करने के लिए, to represent that we write the symbolic representation, that is the chemical formula for that compound. Now, what are the characteristics of chemical formula? Whenever you write a chemical formula, there are some things which you have to keep in mind. What are they? Number one, valencies or charges on the ions must balance. इसका मतलब क्या होता है students? Now, let's understand what valencies are. Valencies are nothing but the combining power of the ions. Combining power का मतलब क्या होता है कि एक आयन कितने और आयन से combine हो सकता है. Let me give you an example. For example, Mg2+. This is magnesium ion which is carrying 2 positive charges. So what's the thing which you have to keep in mind? That the charges must balance. Balance means कि यहाँ पे 2 positive charge है. 2 positive charge को balance करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 negative charges, तभी तो क्या होंगे, दोनों cancel होंगे. तो balance का मतलब क्या है? जितने positive charges उतने ही negative charges, right? So 2 positive charges are there, to balance it you need 2 negative charges. So that means if magnesium has to balance its 2 positive charges, it can combine with 2 negative charges. That means what is the combining capacity of magnesium ion? 2. Valency क्या हो गई? Magnesium की 2 valency हो गई. अपने charges को balance करने के लिए कितने और चार्ज पार्टिकल से वो कंबाइन हो सकता है? 2 से, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल Mg, ठीक है. नाउ वी नो दैट इट हैज +2 चार्ज, गॉट इट. नाउ वी नो दैट ऑक्साइड हैज अ -2 चार्ज. तो ऑक्साइड की भी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी? 2. मैग्नीशियम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है? 2. इसका मतलब इफ दीज 2 कंबाइन टुगेदर, अगर मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन कंबाइन हो गए तो इनके चार्जेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? MgO. ये हमें कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट थिंग, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय अ मेटल और अ नॉन मेटल, मेटल कम्स फर्स्ट. मतलब सिंबल जब आप कंपाउंड का लिख रहे हैं तो मेटल का जो सिंबल है वो पहले आएगा, नॉन मेटल का बाद में आएगा. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ कैल्शियम इज अ मेटल, oxygen is a non-metal, so calcium comes first, oxygen comes later in the symbol. Okay, so it's never OCA, it's wrong, it's always CaO. NaCl, sodium is a metal, chlorine is a non-metal, so NaCl. CuO, copper oxide. Okay, so copper is again a metal, oxygen comes later.
polyatomic ions. So what about the polyatomic ions, students? They are enclosed in brackets before writing the number to show the ratio. So whenever you're talking about polyatomic ions, students, so for example, they have given you the example of calcium hydroxide. Calcium hydroxide. So calcium is having +2 charge and hydroxide, the whole group is having -1 charge. Okay. So when this compound is formed, its chemical formula is CaOH whole twice. That means one calcium ion is combining with 2 hydroxide ions. देखो कैल्शियम की जो वेलेंसी है स्टूडेंट्स वो क्या है? 2 है. मतलब ये 2 और आयन से कंबाइन हो सकता है. हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 1 है. इसका मतलब हाइड्रोक्साइड को तो सिर्फ एक ही आयन चाहिए. सो इसका मतलब कैल्शियम आयन को 2 हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन होना पड़ेगा, तभी क्या होंगे? इनके चार्जेस बैलेंस होंगे, है ना. +2 और -1 कैसे बैलेंस होंगे? जब 2 -1 आएंगे. इफ देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड, तब ये मिलकर क्या बन गए? -2. और ये क्या है? सिंगल, इसके पास +2 है. तो दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड आयंस which are combining with 1 calcium ion. तो ये जो 2 है 1:2 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. एक कैल्शियम है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है. तो ये जो 2 है, this has to be outside the bracket. So you can't write, students, you just can't write CaOH whole twice without any bracket. So CaOH2, this is wrong. You need to put the brackets before writing this number 2. Got it, students? Now, the rules for writing the chemical formula extremely important. We need to follow it. Otherwise, your writing of chemical formula will be wrong. We first write the symbols of the elements which form the compound. Okay, so we write the symbols first. Below the symbol, we write the valency. So the charges or the valency will come below them. Then we cross over the valency. कैसे क्रॉस ओवर करनी है स्टूडेंट्स? The first atom, with first atom we write the valency of the second atom. So it's exchanges, ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं वैलेंसी का. जो सेकेंड एटम है उसकी वैलेंसी चली जाती है फर्स्ट एटम के पास, और जो फर्स्ट एटम है उसकी वैलेंसी चली जाती है सेकेंड एटम के पास. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रॉस ओवर वैलेंसी से ही हम क्या करते हैं? सिंबल्स बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? विल टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स नाउ. Hydrogen chloride. Let's take the first one. First point, first write the symbol of the element. Hydrogen, chlorine. Now we will write the valency, combining power. तो हाइड्रोजन की combining power होती है 1. ओके, +1 लेंगे. मेटल है, मेटल पहले आ रहा है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की +1. क्लोराइड आयन की होती है -1. अब क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. सेकेंड वाला जो एटम है उसकी वैलेंसी जाएगी फर्स्ट वाले के पास, फर्स्ट वाले की जाएगी सेकेंड वाले के पास. सो व्हेन यू क्रॉस देम यू विल गेट H1Cl1. तो हम 1 को नहीं लिखते, वी ओमिट राइटिंग दिस 1. सो योर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl. Got it? Let's talk about magnesium chloride. So we'll write first magnesium, Mg. Chloride is Cl. Magnesium, the valency is Mg2 plus. Okay, so that table you have to memorize, students. Otherwise you will not know what are the valencies. Charges क्या है वो आपको नहीं याद होंगे, तो आप ये फॉर्मूला नहीं बना सकते. So this is +2. Chloride is -1. तो अब क्या करेंगे? क्रॉस ओवर करेंगे. ये 1 जाएगा यहाँ पे और ये 2 जाएगा क्लोराइड के पास. So Mg के पास आ गया 1 and chloride के पास आ गया 2. So we don't write this 1, students. So your chemical formula for magnesium chloride will be MgCl2. Got it, students? How to write it? Let's see the next one, sodium nitrate. Sodium is Na. Nitrate, it is a polyatomic ion. तो polyatomic ion में होता है NO3. This is nitrate. Sodium has +1 charge, nitrate has -1 charge. So 1 will go here, 1 will go there. We don't write 1. So your symbol is, chemical formula is
for sodium nitrate is NaNO3. So remember students, which letters are small, which letters are capital. Okay, Na में ये होता है capital N for nitrogen, capital O for oxygen. So यहाँ पे 1 1 हम नहीं लिखेंगे, जब 1 1 crossover होते हैं, so we don't write 1, we just write NaNO3. Calcium hydroxide, so calcium is Ca, hydroxide ion is OH. Remember students, hydroxide OH. Calcium is +2, hydroxide is -1. The whole group is carrying a charge of -1. So we'll cross over. 1 will go there, 2 will come here. So what is the chemical formula students? CaOH. Now students remember, this 2 is coming over there. तो ये 2 सिर्फ O आपके H के पास नहीं रहेगा. 2 will not be there with only H. It is the whole group will be 2. So this 2 will come after the bracket. So please put the brackets whenever there is a polyatomic ion, put the bracket and then we have to put the number. Okay, so this is something very important. Remember this thing. Ammonium sulfate. Ammonium ion is NH4, sulfate ion is SO4. Ammonium is carrying +1 charge, sulfate ion is carrying -2 charge. Both of them are polyatomic ions. So this 2 will go over there, 1 will go here. NH4, the whole group will be having 2 below. So that means we have to put a bracket and then we will put small 2 over there in the subscript. SO4 is having 1, so we don't write 1. So SO4. This is the complete chemical formula for ammonium sulfate. Calcium hydroxide, again CaOH. Calcium is having +2, hydroxide is having -1. Cross over it. Again, this is a revision, we have already done it. Calcium OH in the bracket, twice in the subscript. Alright students, so there was some of the chemical formula. Hopefully now you understand how to write them. Now let's talk about molecular mass. As students, we have understood what atomic masses are. Molecules किससे बने students? We now know molecules are what? 2 or more than 2 atoms combining together. Those atoms can be of the same element or of different elements. How to calculate the molecular mass? It's very simple. We can just add all the atomic masses which is making that molecule and we'll get the molecular mass. So sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of that substance is known as the molecular mass. जो उस molecule में जितने भी atoms है उनका आप atomic masses add कर लीजिए. So for example H2O, water molecule is there. How to calculate the molecular mass for water? We will add the atomic masses. Now remember, we know that atomic mass for hydrogen is 1U. Atomic mass for oxygen is 16U. But we now know students, in H2O we have 2 atoms of hydrogen. तो यहाँ पे जो atomic mass है हाइड्रोजन का वो तो एक एटम का है. वाटर में 2 एटम्स है हाइड्रोजन के. So we have to multiply 2 with this 1U. Okay. So 2 into atomic mass of hydrogen plus, because there is only 1 atom of oxygen, so 1 into atomic mass of oxygen. Got it? So 2 into 1 for hydrogen, 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen, 16U. So your molecular mass for water comes out to be 18U. Similarly students, when we have this atomic masses table, this is something again you need to remember. A few of them, okay, these are some of the important ones. ये आप use करेंगे again and again, so again आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? So hydrogen is 1U, carbon is 12U, important. Nitrogen is 14, so 16 for oxygen. Sodium is 23, magnesium is 24, sulfur 32, chlorine 35.5 and calcium is 40U. ठीक है, ये atomic masses है, इनको use करके आप molecular mass बहुत आसानी से calculate कर सकते हैं. Now there is a term known as formula unit mass. होता क्या है? होता वही है, molecular mass जैसा ही आपको calculate करना है. So why this term is given? I'll tell you in a moment. It is the sum of atomic masses of all the atoms
present in a formula unit of a compound. So that means students की निकालना तो वही है, जो atoms है आपके formula unit में, तो उसमें जितने भी एटम्स है उसका एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, ठीक है. सो कैलकुलेशन इज द सेम एज मॉलिक्यूलर मास. व्हाई वी हैव गिवन दिस डिफरेंट टर्म फॉर फॉर्मूला यूनिट मास? बिकॉज दिस इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड विथ आयंस. जैसे स्टूडेंट्स H2O है, वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम से मिलके वो मॉलिक्यूल बना है, ठीक है. पर जब आयन से मिलके कोई कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड. मतलब जब भी आपके कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, दे आर आयंस, तो उसके जो मास को हम कैलकुलेट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, तो मैं कभी नहीं कहूंगी मॉलिक्यूलर मास. आई विल नेवर से व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, बिकॉज NaCl इज a compound made up of ions. So all those compounds which are made up of ions, for that we don't say molecular mass, we use the term formula unit mass. Got it students? Otherwise everything is the same. कैलकुलेशन आपको वैसे ही करनी है जैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करके करते हैं, but the term is different. This term just signifies the thing that the compound which we are talking about is an ionic compound. The constituents are ions. उस compound को बनाने की जो constituents है वो ions हैं, ठीक है. So whenever I say formula unit mass for sodium chloride, so you will instantly know that sodium chloride is made up of ions, sodium ion and chloride ion, okay. So for NaCl, to calculate the formula unit mass for sodium chloride, the mass for sodium is 23U, mass for one chlorine atom is 35.5. तो sodium atom का mass है 23, chlorine atom का mass है 35.5U. Now we just need to add them. So formula unit mass for sodium chloride is 58.5U. Now let's take one more example. Calculate the molecular mass for HNO3. This is nitric acid. Got it? So again, one hydrogen atom is there, one nitrogen atom is there, and 3 oxygen atoms, okay. So atomic mass of one hydrogen atom, okay, plus atomic mass of one nitrogen atom plus atomic masses of 3 oxygen atoms. Add them all and you will get the answer as 63U. ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. So my dear students, here we come to the end of the explanation of this part. What have we done? We talked about ions, then we saw how can we write chemical formula, and finally students we saw how to calculate molecular masses and formula unit masses. So hopefully all of this is very clear to you. सब आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया है. And now is the time that we assess your progress. देखते हैं आपको ये जो भी पढ़ाया गया है ये बिल्कुल समझ आया है और there is a need for revision. So let's quickly go on to our quiz time. The first one is students, sulfide ion S2 minus. तो यहाँ पे आपको आयन का सिंबल भी दे दिया है S2 minus. What is it? Is it a monoatomic cation? Is it a monoatomic anion? Polyatomic cation or polyatomic anion? So you can see students, sulfide, it's only having S. So it's monoatomic, है ना, single atom है, okay, it's not polyatomic, it's monoatomic. And above it, the charge is -2. So negative charges are anions. So that means it's a monoatomic anion. Got it students? Let's see the next one. The symbol for ammonium ion. We know that students NH3 is ammonia. Remember students, this is a molecule ammonia. When it turns into ion, it forms ammonium ion. So ammonium ion क्या होगा? NH4 with a positive sign. It's a polyatomic cation, NH4 plus, right? Now let's see the last one students. An element Z. Okay, so there is no element Z as of now, but we have just said this, okay, just मान लेते हैं कि एक element है Z. It has a valency of 3. Valency means combining capacity.
What is the formula of oxide of Z? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Z की वैलेंसी 3 है, सो हम क्या करते हैं, जब भी केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, दे आर आस्किंग यू द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ Z. सो वन एलिमेंट इज Z, another element is oxide. Z has a valency of 3, right? Whenever we try to find the chemical formula, what we do? We write the symbols of the elements, then we write the valencies below it. तो Z की वैलेंसी हमें क्या दी है? 3. ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है? सो ऑक्साइड आयन की क्या वैलेंसी होती है? -2. Got it, students? Remember the ion, oxide ion. Now to find out the chemical formula, what we do? We cross the valencies. So 2 will come below Z and 3 will come below O. So what is the formula? Z2O3. And where is it, students? This is here. The option number B, Z2O3 is the chemical formula of this compound. Okay? Got it? How to do it? So this is a very important thing, students. Keep in mind. So my dear students, here we come to the end of this quiz time too. Hopefully you enjoyed watching this one and now you understand how to write these chemical formula. Also students, all the concepts related to this lesson, hopefully you now know them very well and you're ready for doing more questions. So I'll be meeting you in another one where we'll discuss some in-text questions and some exercises questions. Till then, keep revising, students. Thank you so much for watching.